Dann हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड। ये जो मेरी क्लाइंट है मोस्टली घर पर व्हीट क्रीम का यूज करती हैं या फिर कभी कभी रेजर कर लेती हैं। अब ये मेरे पास आई हुई थी मेकअप करवाने के लिए, जिसमें इन्होंने एक ऐसी ड्रेस वियर करनी थी जिसमें इनके आर्मपिट के हेयर अलग से दिखाई दे रहे थे। तो मैंने इनको बोला था कि आपने क्या करवाना है, तो ये बोले कि आप शेविंग ही कर दो, मुझे वैक्सिंग नहीं करवानी। मुझे वैक्सिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो ऐसे में मैंने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग काम आर्मपिट शेविंग करने के लिए मैंने स्ट्रेट रेजर का यूज़ किया है और उसके अंदर मैं ब्लेड फिक्स कर रही हूँ। गाइस, जब भी आप आर्मपिट शेविंग करें, चाहे किसी भी पार्ट की शेविंग करें, आपने ध्यान देना है कि हमेशा न्यू ब्लेड यूज़ करें और उसे यूज़ करने के बाद आपने थ्रो कर देना है, किसी अदर पर्सन पर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ क्लाइंट को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सभी की स्किन अलग होती है और हाइजीन के पर्पज़ से भी ये ठीक रहता है। स्ट्रेट रेज़र का मैं यूज़ करने जा रही हूँ, प्रॉपर तरीके से ब्लेड सेट हो चुका है। पहले मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे कर लिया है, अब मैं टाइट करो ऊपर शेविंग से बाल, करूँगी। आप एलोवेरा जेल का ऐसे भी ऐसे। यूज़ कर सकते हैं बिफ़ोर में। आफ्टर यूज़ के लिए भी मैंने एलोवेरा जेल ही यूज़ किया था। Dann टाइट रखो स्किन को। डन। कहाँ गया मेरा औजार? टिश्यू पेपर नहीं लगाया। गई बात तो भाई। बस।